So when I was in 10th, I participated at the state level competitions, which is called as Yuak Mahotsav. At that time, we used to call it Yuak Mahotsav. Even someone like you wouldn't have to start from the beginning, right? Like from the scratch. Hello everyone, welcome to Sunehri Baatein. I'm thrilled to bring you conversations that dive deep into the art, passion and stories behind extraordinary talent. Today, we have a truly special guest that has won hearts with her soulful voice. A maestro in classical, Sufi and ghazal, Miss Sonal Shah. Sonal ji, your voice carries immense depth and devotion. Apart from knowing that this is your talent, when did you figure out that this is your life's calling? Well, when I was in 12th class, it was when I was working for the possibilities like to become a doctor or to make a career in cricket or to take admission in dramatics. Yeah. But I think it was music Yes. which took over everything. And it was then when I realized that music is not just a passion or a profession for me. It's something I can't live without. That's a beautiful thing to figure out. Thank you. You moved from Mumbai to Vadodara at a very young age. Now we all know about Vadodara that it is a Sanskari Nagari. It is rich in culture. So how did that shape you, your life experiences with music? Well, I think irrespective of the location, I think music was in my destiny. So compared to Vadodara or Mumbai, where you have to catch the train of 12:16 and 2:22. So comparatively, Vadodara is a very peaceful city. It and really is. so it helped me take the training at my pace and in a peaceful manner. So Vadodara is really a peaceful city and I am a very peaceful soul. Yes. So yes, it helped me to gain the knowledge at my pace. And your genre requires peace, so I guess that also helped, right? Definitely. You have said that your grandfather has a very important role in your music career. Could you share something about that? Definitely, so many memories linked with my grandfather. One lesson which I still remember is that it is very necessary and important to fail in life. So that's true. Yeah. So I would like to share one of my experience with my grandfather while I was young. Yeah. So when I was in 10th, I participated at the state level competitions, which is called as Yuak Mahotsav. At that time, we used to call it Yuak Mahotsav, which is youth festival. So after completing all the 3 rounds, I was selected for the state round. And in the finals, I performed beautifully. And all the audience who were there listening to me, before the results were declared, they came to me and they congratulated me, saying that undoubtedly I am going to be the winner. But when the results were declared, I was at the 3rd position. Although 3rd is also a rank, but for me it was like I failed. Because till then it has happened that whenever I used to participate in any competitions, I used to come with the trophy of 1st rank. And being a state level competition, it was very important for me to win. That's true. So when the results were out and they said that I'm on the 3rd position, I cried a lot. Aww. And at that time my grandfather said that this was necessary for you. Right? And Failures lead to success, right? yes, and he said, don't cry, participate again in the next year and we will again come. So when I was in 11th, I again participated, I cleared all the 3 rounds. Again I was selected for the state level. Again I performed to the best of my capacity and again the same story. I was waiting for the results. And when the results were out, I was not even in first 3. So, but at that time, I didn't cry. Yes. I said, now I am going to prove that I deserve this. And so True, same. I said to my grandfather that I will work hard and we will come again next year. So when I was in 12th, again I participated all the process and all the 3 rounds and finally getting selected for the state round. Again I performed because I wanted to win, no? Yes. So again I gave my best performance. But at that time there was one candidate who was very challenging for me, Parthiv Gohil. Okay.
When I performed, he came to me and he said, Sonal, you sang beautifully and you are going to be the winner. And I said, Parthiv, I feel that you are going to win this. And when the results were out, I was declared as a winner. So the judges for all the consecutive years, for all the 3 years, coincidentally it happened that all the 3 judges were the same for all the 3 years. Okay. So they came to me and they said that we know that you are a very good and very talented singer, but sometimes we have some upper pressures and we are not able to do the justice to the right candidate. We are sorry for that. But keeping apart that side, I think all these 3 years where I struggled to get that thing which I want, it was a huge experience for me. And at that time I realized that it's necessary to fail in life. It really is. Yeah. Even someone like you wouldn't have to start from the beginning, right? Like from the scratch. Yes, definitely. Yes. You know, I have noticed that you're equally comfortable in classical music as well as simple music. आप बहुत अच्छे से balance करते हो. मैंने आपके songs सुने हैं. So how do you cope up with that? How do you keep that discipline? आप कैसे manage कैसे करते हैं आप? You mean the technical details? Yes. So far as the technical details are concerned, I think it has to be taken care of while we are taking the training, right? So once we are thorough with the training part, you don't need to refer every now and then to it. So then while performing, the only thing which as an artist which I have to take care is about the emotional part of the performance, Yes. right? So Correct. I also know that you're a gold medalist and a UGC NET qualifier. Now tell me this, that how did that feel and how much struggle did you have to do to reach that level? definitely being an introvert, hardcore introvert, I'm also a workaholic. And so whatever I do, I believe in doing it in a systematic way. Yeah. Right? So I have worked hard for all these things to gain where I am, and thanks to God that He supported my dreams. So definitely it helped me. But it's a great combo, you know, being an introvert and a workaholic that keeps you focused in your work. I think most of the introverts are workaholic. we can say that. We can say Because we don't move around people, right? We are very aloof and we are very peace with ourselves. Just focused in what you're focused. Definitely, we are very focused. So, मेरे questions नहीं खत्म होंगे because आपके achievements ही इतने सारे हैं. So about that, I know कि आपने 2000 plus live shows करे around the world. So I just want to know कि आपने उसमें कुछ emotionally कुछ changes लाए हो क्या खुद में, कि आपको खुद को prepare करना पड़े किसी stage performance के पहले, something like that. See, preparing oneself emotionally or mentally or spiritually, right? I think it's a slow process. It's not a castle we can build in a one day or one night. So it's a gradual process. Each day we grow thread by thread, right? Right. So it's all a combination of hard work and grace of Almighty, which takes you where you are standing today. You have received more than 70 awards along with the Surmani Award. I just want to know which one is your personal favorite and why? There has to be one, come on. See, nothing like a favorite, but let me just clarify, because each and every award is very close to my heart. Yeah. I will tell you why, because I have worked hard for it, Of course. right? Every And award is truly special to you because you have earned it. yes, irrespective of the level, whether it was at school level or city level, state level or national level, right? Yeah. I have worked hard for it, and each award has contributed to my confidence level and joy, my inner joy. So as I said, that each one is very dear to me. But so far as affirmation is concerned, I would like to say that all those which I got at the national level, range is very vast, where it is very difficult for you to get selected. And so definitely they are very The national award ones are your Yes. most dear ones. definitely. Of course. Sufi and ghazal music need a deeper connection. So do you do it spontaneously or do you have to prepare for it first? Of course we have to prepare ourselves for that, because it is not that एक घंटे में मैंने तैयार कर लिया और मैं कर सकती हूँ. I can do that, but I won't be able to create that atmosphere or that aura, right, if I am not prepared from within. So as I said earlier that it's a gradual process, and वो
सूफी में हम लोग कहते हैं कि रूह को आमादा करना, मतलब कि रूह को प्रिपेयर करना। That's a very powerful line. अगर अंदर से हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, then we won't be able to connect to that power. So it's very necessary to dive into that emotions and that readiness. Sufiana Rangs by Sonal ke Sang is both composed and sung by you. So tell me, how has that helped you in your career, and how did you think about doing that? How did you think about creating something so magical? Well, so far as releasing my album, Sufiana Rang Sonal Ke Sang, it was not out of encouragement, to be very frank. Rather, it was some pressure on me that I have to give something of my origin, right? Yes. मेरा खुद का मुझे कुछ देना है. So it was like a pressure on me. But of course, there was joy also connected to that pressure. So it happened कि मैंने तब तक, जब तक मैंने ये मेरा एल्बम रिलीज़ किया था, उससे पहले मैंने बहुत सारे कंपोजिशंस कलाम को कंपोज करके रखा था, एंड आई यूज्ड टू सिंग देम लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. बट देन आई रियलाइज कि while आई एम सिंगिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इट इज़ लिमिटेड टू दैट ऑडियंस ओनली. सो to make my kalams reach to the mass, I thought that it should come in the form of an album. And I would request everyone listening to us that please listen to the album, because I have worked hard for it. I have, in a very selective way, मतलब मैंने जो अपना इंतखाब किया है वो बहुत ही मैंने सोच समझ के किया है. इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ सूफी इमोशंस वेर आई हैव कवर्ड the traditional kalams of Hazrat Amir Khusro Sahab and Baba Bedam Parsi Sahab, along with a contemporary poet Janab Moeed Rashidi Sahab. So it's a beautiful kalam, not because it's my creation, but definitely you should have a look at it. What would you like your viewers to feel when they listen to your album? See, again, feeling the music depends on individual, at what level of spirituality or what level of mental connection you are listening to the particular song, right? Right. So I leave it to the listeners कि आपको क्या महसूस होता है. आप सुनकर हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और कहाँ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं. Yes. So it is all about the different level where you are standing and from where you are listening to the music. With streaming platforms such as Spotify and iTunes becoming so popular nowadays, where do you think the future of classical Sufi and Ghazal music is going? If you are asking me this question, definitely I would say it's very bright, because I'm into it. I'm working for it. Yes. I'm contributing to its future. But frankly speaking, future doesn't lies in my hand, right? Future of any art is decided by the society. So it is we all who will be deciding what type of music do we preserve, and ultimately that will shows that what type of character we hold. Let us see, time will show us what we are preserving. Whether we deserve this type of music or not, time will show us. Of course. Also, this podcast is of Square Petals Global Media Entertainment. I'm grateful. So I just want to know, what are your views about it? What do you think? I think it's a great platform for all the artists who are very passionate about their career and their passion. And I think Square Petal is doing a good job. Yeah? Yeah. Indeed it is. Yeah. Challenges are a part of life. And I want you viewers to know that we have a very strong and inspiring singer here with us. It's because when she was at her peak of her career, Miss Sonal Shahji, she was diagnosed with third stage cancer. And today is World Cancer Day, as we know, 4th of Feb. And I'm very inspired and honored that I get to talk to you on this day. Thank you. You are a very incredible person and very strong, and I admire you for that. So tell me this, how did music support you during your tough phase? It was a very tough journey for me. Definitely music worked as a therapy for me. And being in music since so many years, it was connected from within. I was connected with music from within. But yes, at that time, I realized that yes, music is a very good therapy for those who really want to get up from serious diseases like cancer. Deadly diseases. Yeah. You're very strong for that. Thank you. Has your life changed after this tough phase of yours with cancer? Definitely it has changed, because as I said, I'm an introvert.
Yes. And because I'm an introvert, I'm a workaholic. So till the day I was operated for the colon cancer, I used to work simultaneously with so many things. I mean, it was a very busy life for me. And the day I was operated for the cancer, I was totally bedridden. I was not able to get up from my bed. And so I was forced to slow down. And one day I saw the sunset from my balcony. And at that time I realized that what I was missing all these years. I mean, looking at the sunset, I felt that there's something incredible which I was missing. All these years running after the things. And at that time I realized that it is not just okay, rather it is very important and necessary to slow down in life, to appreciate the things which are around us, given by nature. True. So yes, my angle of looking at life has changed. Definitely it has changed. Many times what happens, we see something but we ignore it, and we always ignore the things which are very important in our life. And at that time I realized. So again, from this platform I would like to thank one and all who prayed for me, who were with me, who encouraged me to get up from this and to come out from this. Frankly speaking, although I'm a very, very positive attitude holder, there was a time where I was not sure whether I will be able to make it or not. So it was all the prayers of all the people who are loving me. And while I watched the sunset, I prayed to Almighty that please give me one more chance to live. So, and I'm here. So I'm grateful to Almighty for giving me the second chance of life in life. And it also shows that I still have to work on myself. I have not yet reached my home. And that is why I'm here. Again, thanks to all those who said and encouraged me, saying that universe will help me, or universe will heal me in the ways I can't imagine. I'm grateful. No words for it. Would you like to have some water? No, thanks. I'm comfortable. Comfortable? Yeah. What would you like to tell the young musicians that are struggling with self-doubt, rejection, and some even with health challenges? What would you like to say to them that might encourage them, inspire them? Very important question. Yeah. So far as self-doubt is concerned, I would like to say self-doubt is nothing but half-hearted efforts. Give your 100%, whatever you are doing, right? एक बार देख दो अपना 100% दो. See what happens. Sometimes we hold ourselves back. Not giving 100%, the reason could be anything. It could be past life experiences, past life traumas, laziness, fear of getting rejected, right? And so we hold ourselves back. Yes. But I think it's very important, irrespective of the past life experiences, right? Yeah. Yes, of course, you have to take the lessons from the past, but you don't have to hold yourself back in giving your 100%. So I think give your 100% and you won't be at self-doubt. It's And like how Krishna ji said that karm karte jao but phal ka chinta mat karo. Exactly. As long as you are working hard towards something, you will get something out of it, and you don't have Definitely. to actually think that you will get it. Yeah, right? Definitely. Yeah. And again, so far as the rejection part is concerned, again, if you have given your 100%, तो rejection का जो pain होता है ना वो कम हो जाएगा. Ji. Right? Because you know that you have given your 100%. 100%. So at the end of the day, you will be able to sleep peacefully. You'll be satisfied. Yes. At least I gave my everything. Yes, I have done to the best of my capacity. Rest is in the hands of the Almighty. And here comes the divine intervention. I think when universe rejects, or he doesn't give us something, sometimes it is not rejection, sometimes it is redirection. Yes. जब कुछ चीज़ हम, of course, जब हमको वो नहीं मिलता है, at that time it feels pain here, right? It pains here. Yes, of course. It But feels. over a period of time, जब हमको उससे कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, and we look back, तो हमको पता लगता है कि हाश जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ मुझे वो नहीं मिला. Yeah. Again, Krishna ji ki वही line, everything happens for a reason. Exactly. And second thing I would like to say that
sometimes you get rejected when the time is not right. Yes. If I compare it with the incidents which I just told you about my participating at the state level competition, see, I gave my 100% at the first attempt when I was in 10th, and I was at 3rd position. So जैसे मैंने कहा कि मैं रोई थी, मुझे पेन हुआ था, बट क्योंकि मैंने मेरा 100% दिया था, रात को मैं सुकून से सोई थी कि कोई बात नहीं, मैंने मेरा 100% दिया आगे और मेहनत कर सकती हूँ। यस। सेकंड टाइम जब मैं रिजेक्ट हुई तो मैंने सामने से कहा कि नहीं, मैं आई विल अगेन वर्क ऑन दिस एंड आई विल कम बैक. सो कैसे पता लगेगा कि वेदर इट इज़ रीडायरेक्शन और द टाइम इज़ नॉट राइट, राइट? सो आई थिंक द सोल नोज द आंसर. यस. उस वक्त मेरे अंदर से था कि नहीं, मैं ये डिज़र्व करती हूँ. इट्स जस्ट दैट द टाइम इज़ नॉट राइट. And when you feel that the time is not right, or when you feel that you are rejected but still you deserve it, right? वो जो अंदर से होता है कि नहीं, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे लिए ही बना है. तो listen to the universe. What is it trying to tell you, right? See, I will tell you that I gave my 100% for all the 3 years, but I was giving my 100% from this level. और जो चीज़ मुझे हासिल करनी थी वो यहाँ थी. Right? So you understand the difference? Yes, I'm understanding. I was working and giving, working at the fullest of my capacity from this level. जबकि वो चीज़ यहाँ थी तो कैसे मुझे मिलेगी? Exactly. So universe is telling in a secretive manner that grow yourself. Grow yourself. Grow spiritually, need grow some mentally, experience yeah, also. grow mentally, grow technically. So for all the 3 years, I worked on it. Yes. And definitely mentally भी मेरा कुछ improvement हुआ था. बिकॉज जब वो चीज़ ऊपर होती है तो वी हैव टू ग्रो हियर एंड देन गिव योर 100%. डेफिनेटली यू विल गेट इट, राइट? बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम जो चीज़ यूनिवर्स हमको बता देते हैं कि तुमको यहाँ पर जाना है, राइट? फिर उस वक्त नहीं देते हैं. हाँ. लेकिन अंदर से हमको होता है कि नहीं, यही है और यही चाहिए. मुझे तो यही चाहिए. मैं तो इसी के लिए मेहनत करूँगी. यही हमारा टारगेट. दिस इज अवर होम. दिस इज वेयर वी हैव टू रीच, राइट? सो बिकॉज सम थिंग्स नीड more maturity, more grace to hold that place. ठीक है ना? So 3 साल के बाद जब मुझे वो award मिला, I accepted it from a different level of mentality, from a different level of maturity, from a different level of grace. Exactly. Right? तो वो उस जगह को hold करना वो बहुत important है. अगर पहली बार में ही मुझे मिल गया होता तो आई वुड लाइक आई एम समथिंग, मैं तो बेस्ट हूँ, आई एम समथिंग, या मुझे तो कोई हरा नहीं सकता. It's not always that. It's not always that. And again, I would like to say, if your soul is saying that this is a thing meant for you, work hard for it. And as it is said that universe always give you what you work for, or what you fight for, what you fight for, not what you wish for. Exactly. You have to work for it. Yes. That's true. Yes. आई होप अब जब भी लोग आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे तो इससे वो समझ पाएंगे, दे विल टेक अ डिफरेंट व्यू इन लाइफ कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं. सो रिगार्डिंग द हेल्थ इश्यूज, आई थिंक बिकॉज अभी आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, राइट? बहुत छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है. यस, ब्रेन हेमरेज हो रहा है. सी, आई वुड लाइक टू से दैट हेल्थ इश्यूज़ अगर हम उसको ब्रॉडली उसको डिवाइड करें तो फर्स्ट इज़ हेरिडिटरी, राइट? जो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है. बट एट व्हेन इट इज़ हेरिडिटरी यू आर अवेयर ऑफ इट कि मेरे पेरेंट्स में है, ये था या है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे में भी आएगा. सो व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट इट यू डील विथ इट इन अ डिफरेंट वे, राइट? आपको पता है कि आपको ये आ सकता है. सो यू विल डील इट विथ अ डिफरेंट एंगल, फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल. द अदर थिंग इज health issues can happen when you are I mean dining out quite often, yeah, and depending on the fast food. और specifically इस generation में ये बहुत है. तो take care of yourself. एंड इसमें ये है कि इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ मेंटली, और आप डिसाइड कर ले कि नहीं, मैं महीने में 1 या 2 ही बार खाना बाहर खाऊंगा या खाऊंगी, आई थिंक यू कैन टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. बट द थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
And in my case, this was the thing why I was trapped in cancer. See, whenever something is not right from within, right? Something is disturbing you from within, it makes us sick. So it was for almost 25 years I was not able to open up. So क्या होता है कि when our body, mind, heart and soul are not in alignment, है ना, वो जब एक लाइन में नहीं होते हैं ना, तब बीमारियाँ होती हैं, और वो जब होती है ना तब बहुत बुरी तरह से होती है. So you need to open up, you need to work on all your chakras, right? Your heart chakra, somewhere your heart chakra is blocked, somewhere your throat chakra is blocked, somewhere your sacral chakra is blocked. So work on it, because Yoga it is... helps for that, right? Pardon? Yoga helps for Yes, that, yes, right? yoga, meditation and everything will help. But you have to work on it. Because आप नहीं बोलेंगे, who will fight for you? No one is going to fight for you. It is ourselves who have to fight for us. Even God says that He'll only help those that help themselves. Yes, definitely. So कई बार हमको लगता है कि हम दूसरों के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, राइट? आप एक बार उनसे पूछिए कि भाई मुझे कैंसर हुआ, आधा ले लेगा क्या? कोई नहीं लेगा, राइट? मैंने तुम्हारे लिए इतने पाप किए. द सेम स्टोरी ऑफ वाल्मीकि एंड वालिया, हाउ वालिया बिकेम वाल्मीकि, राइट? उसको जब लगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ लोगों को खुश करने के लिए, कोई जो भी रिजल्ट्स आएगा वो तो मुझे भुगतना है. Exactly. People pleasing is something that shouldn't be encouraged. Yes, definitely. And I think we are not here to take permission from any other person while we are working for ourselves, right? Right. So अपने पर काम करना तो हमारा हक बनता है, और बोलना भी चाहिए, और fight for yourself. खुद का ख्याल खुद रखना चाहिए. Yes, definitely. और कई बार ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरी बातें होती है, एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर इंट्रोवर्ट्स. तो ये कहते हैं मैडम नहीं बोल पाते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है वो रहा है. सी व्हाट आई फील ओवर ऑल दिस ईयर्स, एक्सपीरियंस से सीखते हैं. ऐसा तो नहीं है मेरे में ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि कहाँ थपाट पड़ी है और भाई क्या करना है, ठीक है ना. तो व्हाट आई फील कि जैसे ये लोग कहते हैं, इंट्रोवर्ट्स कहते हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, देन दे फाइंड सम डिफरेंट एस्केप्स कि ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ. वो मैं भी वो करती थी कि मैं गाना एकदम से शुरू कर दिया, ये प्रोग्राम्स करो वो प्रोग्राम्स करो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट लेट मी टेल यू कि जब इंट्रोवर्ट्स अपने लिए खड़े होते हैं ना, नो वन कैन स्टॉप देम. एक बार वो अगर ठान ले कि अब नहीं, तो पूरी दुनिया हिला देते हैं वो लोग. Of course, because silent ones are the ones that are the most. Yes, और वो करना ज़रूरी भी है. So all those who are struggling with health issues, stay positive, work from within. एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और अंदर से कीप फेथ इन ऑलमाइटी कि अच्छा ही होगा. ओके, लाइक पहले तो खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, एंड अगर बाय चांस कुछ हो भी जाता है, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ. Yes, इट हैपेंस एंड you'll heal from it. Yes. It's not the end of the world. No, definitely not. It's a new beginning. It's a new beginning. Fresh beginning. Fresh beginning. So when people appreciate you, they say that you have a magical voice and a majestic personality. How do you feel about it? And what do you think actually is success? Could you define success? Well, so far as the other person appreciating me, I would like to quote Rumi here, that the beauty you see in me is a reflection of you. So all credit goes to the person who is appreciating me, whatever qualities they see in me. I'm thankful to them, and it's the reflection of their beauty which they are seeing in me. It's like that line in English that beauty lies in the eyes of the beholder. Definitely. And so far as definition of success is concerned, my definition is very different. If at the end of the day, or at the end of the task, or at the end of a career, or at the end of passion, or even at the end of the relationship, if you are not at peace, or you are not feeling joy from within, it's a failure. Of course. So for me, success is peace and joy. Peace and joy. Yes. Because that is what we live for, right? Definitely. Whatever we do in life, it's just so that we could live peacefully and happily. Definitely.
सोनल जी, सूफी म्यूजिक का एसेंस क्या है? What actually is Sufi music? This is Suneri ji, Sufi is not a music, it's rather a way of living. So whatever we are singing in the name of Sufi music, it actually the experience of all the Sufi faqirs, where they have noted the experiences in the form of kalam, and that is what we are singing in the form of music. So basically, Sufi is a way of living. Sufi is a way of living. The attire you are wearing right now resembles the Sufi way of living. So does that also match that Sufi way of living personality? Frankly speaking, not, because Sufism is all about, because I'm in front of camera and I have to be in presentable. So that is why I'm holding all these things. But Sufi has nothing to do with all this, all this. Yes, it is preparing the soul. I just thought that maybe this is that culturally worn No, type of nothing clothes. like that. Nothing like that. Nothing? Okay. In your view, what is actually the Sufi way of living? Ishq, ibadat, ikhlas, intizar. So I would say divine love, dedication, diligence, and desire. Desire in the sense of intizar. Intizar. इंतज़ार वहीं करते हैं जहाँ उम्मीद होती है. Yearning, right? या yearning, yes. तो इंतज़ार वहीं करते हैं जहाँ पर हमको उम्मीद होती है. अगेन द सेम थिंग कि हमारे सोल को पता होता है, राइट, कि यहाँ जाना है. तो अंदर से फीलिंग आती है. यस, अंदर से फीलिंग आती है. सो बाबा फरीद का वो है ना कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, मुहे पिया मिलन की आस. सो वो पता लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ एक उम्मीद होती है, एंड दैट इज़ वाई द डिज़ायर. सो उम्मीद एंड डिज़ायर गोस हैंड इन हैंड. एंड एज यू सेड, व्हाट इज सूफी म्यूजिक, आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ जर्नी फ्रॉम इश्क मजाजी टू इश्क हकीकी. What is Ishq Hakiki? Ishq Hakiki is the ultimate love, the divine love, the love for the light within. I would like to specifically mention here that it has nothing to do with any particular religion. ठीक है? Of course. जो सूफी वर्ड है वो एक रिलीजन के साथ, वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, बट द एक्सपीरियंस इज यूनिवर्सल. कबीर वॉज अ सूफी, मीरा वॉज अ सूफी, महावीर वॉज अ सूफी, बुद्ध वॉज अ सूफी. ठीक है ना? तो ये सारे सूफी थे. इट इज़ बेसिकली द इनर एनलाइटनमेंट. तो यस, डेफिनेटली इट्स जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज़ इश्क हकीकी, इट इज़ अलाइनमेंट विद आवर इनर सेल्फ. दैट इज़ इश्क हकीकी. Okay. क्या बात है. You have said it so beautifully. Those lines are very magical to hear. थैंक यू. Sonal ji, you just mentioned about the terms of the levels Ishq Majazi and Ishq Hakiki. So how do you transition from that? Very important question, because we all are in the 3D world, right? So what I feel, we can't neglect this. और इश्क हकीकी का जो रास्ता है ना, वो इश्क मजाजी से होकर ही जाता है. यू कांट निगलेक्ट दिस वर्ल्ड. ठीक है ना? अगर यहाँ कुछ अधूरा रहता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. यहाँ जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. ठीक है ना? सो क्या करना है, राइट, कि कैसे उसको ट्रैवल करना है. मेरी समझ से मैं आंसर दूंगी. आई एम नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर दिस, Of course. बट सी हम देखते हैं कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो जितने भी लोग हमको मिलते हैं, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दैम थ्रू सम कार्मिक डेट. Comment. राइट. Yep. सो हम देखेंगे कि आप अगर सोचेंगे कि कैसे कैसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो कोई आएगा बंदा, बहुत प्यार करेगा, बंदा या बंदी बहुत प्यार करेगा, अचानक से निकल जाएगा विदाउट नो वैलिड रीज़न, राइट. Yeah. सो कार्मिक था, वो इतना ही था, प्यार उनसे लेना था या देना था, ख़त्म हो गया. कुछ लोग आएंगे ऑन ऑफ सिचुएशन में आएंगे. दे विल कम, दे विल ट्रिगर यू, समटाइम्स दे विल सपोर्ट यू. तो ये एक दूसरा कार्मिक पैटर्न है. लाइक आवर फ्रेंड्स, कई बार सालों तक नहीं मिलते हैं, कई बार आते हैं, बहुत सारा प्यार जताते हैं, कई बार मुसीबत में काम आते हैं, कई बार कुछ ट्रिगर करके चले जाते हैं. Yes. द थर्ड वन सर
आएंगे, ट्रिगर करेंगे, बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेंगे, एंड दे विल लीव, ट्रिगर करके निकलेंगे, बट दे हेल्प अस ग्रो इन लाइफ, राइट? कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है. या बट दे वोंट स्टे इन अवर लाइफ. एक बार ट्रिगर करके निकल जाएंगे. द अदर वंस आर our family members. They are also, we are with them because of our karmic debt. तो जैसे हमारे पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, स्पाउस है, ये भी ट्रिगर करते रहते हैं, बार बार ट्रिगर करेंगे, राइट? आई मीन इरिटेट करते रहेंगे, राइट? बट द थिंग हियर इज नॉट नेसेसरीली दे विल हेल्प अस टू इवॉल्व इन लाइफ. Why? Because whenever we get triggered by them, we try to solve the issues staying in the same aura. उसी वाइब्रेशंस में रहकर हमको लगता है कि ख़त्म करो इसको, है ना? तो हम आगे पीछे की नहीं सोचेंगे, बस इसको ख़त्म करके उसको सेटल कर दो. सो नॉट नेसेसरीली दे विल हेल्प अस टू ग्रो. बट या इफ़ यू आर लकी, अ सोल विल एंटर इन योर लाइफ, राइट? हु विल ट्रिगर यू एट द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द सोल. बहुत ही गंदी तरह से ट्रिगर करेंगे, राइट? कि जो पार्ट हमसे छुपा रहे हैं, हम उसको छुपा के रखते हैं, वी डोंट लाइक टू फेस दैट पार्ट, राइट? उसको वो ट्रिगर करेंगे, राइट? यू सी द रिलेशन बिटवीन रूमी एंड तबरेज़ जी. गुरु शिष्य है वो दोनों, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप, it could be in the form of a teacher and a disciple, it could be in the form of a divine counterpart. I mean, don't tag it in a relationship, it's a soul connection. तो जब वो ट्रिगर करते हैं हमको, at that time we feel very bad, but the ultimate goal is उनका मकसद ये होता है कि हम ग्रो करें, राइट? और अक्सर ये होता है कि जो पार्ट हम छुपाते रहते ना, वही हमें ज़िंदगी भर परेशान करता रहता है. एज आई सेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू ओपन अप फॉर ऑलमोस्ट 25 years इन माई लाइफ. इट वॉज इनसाइड मी. तो ये कोई आएगा और ट्रिगर करेगा. Suppression is not a great Yes, habit. और ये ट्रिगर करेगा. बट द गुड थिंग इन दिस कनेक्शन इज दे वोंट लीव यू, राइट? दे विल शो द डार्केस्ट पार्ट. They will not help you or they will not remove the darkness, but they will stay with you till you find the light within. This is very important. Agreed. And it's the most beautiful thing you can ever experience in life, Yes. right? So जब तक हम हमारी अंदर का लाइट नहीं देखते हैं, तब तक वो लोग रहेंगे हमारे साथ, right? It's a beautiful connection. और अगेन एज आई सेड कि कैसे इस जर्नी को कैसे ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ है तो ये तो ट्रिगर वाला जो पार्ट है वो तो दिन रात चलता रहेगा. यू कांट अवॉइड दैट, ठीक है ना? सो एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्या होता है, जितने भी लोग हम में से जो भी एक स्टेप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े हैं, व्हाट वी थिंक, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस, राइट? वी सर्च फॉर आवर लाइफ पर्पस. मुझे क्यों भेजा गया है, मुझे क्या करना है? और आप देखेंगे कि सबको लाइफ पर्पस में यही मिलेगा कि मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है, मुझे लोगों का भला करना है, मुझे उनके लिए अच्छा करना है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट व्हाट अबाउट योर ओन सेल्फ, राइट? That also matters. Yes. सबका ख्याल Why? रखते See, I will tell you what is the difference. हम लाइफ पर्पस के बारे में कब सोचते हैं? जब हम बहुत बुरी तरह से हमारे अंदर से घायल होते हैं. जब हम बहुत खुश होंगे तो तब तो कोई लाइफ पर्पस नहीं सोचता. हाँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, मस्त चल रहा है. हाँ, कोई लाइफ पर्पस को नहीं, जिसको जो करना है वो करें. लेकिन अंदर की जब शांति हमारी कोई ले जाता है, तब वो ट्रिगर होता है कि नहीं, अब तो मुझे म्यूजिक करना है, मुझे लोगों के लिए गाना है, मुझे लोगों के लिए वो करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, राइट? सो विच इज़ अ गुड थिंग, डेफिनेटली. लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है, राइट? अगर ट्रिगर होके मैं म्यूज़िक की ओर बढ़ी हूँ, सूफिज़म की ओर बढ़ी हूँ, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है. दे आर लिसनिंग टू मी एट सोल लेवल, दे आर फीलिंग एट पीस, राइट? बट अगेन द क्वेश्चन इज़ कि मेरा जहाँ से मैं भागी हूँ, जिस चीज़ को छुपा के मैं भागी हूँ, जो मैंने सॉल्व नहीं किया है, उसका क्या, राइट? सो किसी ना किसी दिन तो सामने आएगा ही. Yes, so I think the main difference between our way of thinking and the way a Sufi fakir thinks is while we are searching for our life purpose, Sufis, they are searching for the soul purpose, and that is very important. That's a very deep line. Yes, because what I feel, this journey is not of a life.
See, while we are searching for the life purpose, it is restricted to this life only. ये जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो लाइफ पर्पस खत्म हो जाएगा. बट द जर्नी इज ऑफ द सोल. सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to take care of our soul evolution and not of the life purpose, right? Okay. Yeah, so, materialistic things में खोने से अच्छा you focus नहीं on कीजिए आप, अच्छी बात है लोगों के लिए करना, लोगों को अपलिफ्ट करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वॉट एवर आर्ट और वॉट एवर टैलेंट यू आर हैविंग, राइट? बट इट शुड नॉट बी फ्रॉम द रनिंग थिंग, राइट? किसी से भागकर आप कहीं चीज़ को आप सामना नहीं करना चाहते हैं इसलिए आप ये लाइफ पर्पस के पीछे भागे. आई थिंक दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क एट द हायर लेवल. एग्जैक्टली. सो वो करना बहुत ज़रूरी है. तो भी कैसे करें, ठीक है ना? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट. व्हाट आई थिंक दैट जस्ट कनेक्ट देयर, ये अपने आप छूट जाएगा, है ना? इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कनेक्ट होने की ज़रूरत है. हाँ. अगर वहाँ कनेक्ट हो गए तो धीरे धीरे छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा. एंड वन मेन थिंग इज कि जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज कार्मिक डेट. सो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई प्रैक्टिस इज डोंट इंक्रीज योर कार्मिक डेट. ठीक है ना? देखिए, जब हम शादी करते हैं तो हस्बैंड के साथ एक पूरी फौज आ जाती है, काका मामा चाचा कोई सब लोग बुआ सब लोग आ जाएंगे. ज़रूरी नहीं आप सबके साथ डील करो, राइट? एट अ सर्टन लेवल यू डोंट हैव टू बी रूड, ऑफ कोर्स, बट एकदम अंदर घुस जाना और नहीं है कुछ उनके साथ फिर भी उसको आगे चलाते रहना, तो आई थिंक उसमें ये होगा कि हम वहीं पर अटके रहेंगे. वी वोंट बी एबल टू इवॉल्व इन लाइफ. तो इवन इन हस्बैंड एंड वाइफ कि किस तरह से उसको करना है, कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे कार्मिक डेट कम हो रहे हैं, राइट? तो सिंपल थिंग इज़ कि जब मान लीजिए कि कुछ पास्ट में हुआ और वही थिंग सालों बाद फिर से हमारे साथ होती है, राइट? आपको पता लगेगा कि अब कार्मिक डेट कम हो रहे हैं बिकॉज द वे यू रिस्पॉन्ड टू दैट, राइट? पहले हम चिल्लाते थे, झगड़ा करते थे, तू मैं करते थे. आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ इवॉल्वमेंट, जब हम इवोल्यूशन, जब हम सोल लेवल पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, सोल पर्पस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, हम इसको अलग तरीके से डील करें. दिस इज वी आर रिड्यूसिंग अवर कार्मिक डेट. ज़्यादा पीसफुली, थोड़े कम इश्यूज के साथ. यस वो उसको शांति से कर रहे हैं. सो मेन थिंग इज दिस, हाउ टू ट्रैवल द और हाउ टू रिड्यूस दिस गैप. जस्ट कनेक्ट देयर. यहाँ से अपने आप ठीक हो जाएगा. ऑफ कोर्स, जस्ट हैव अ कनेक्शन विद द डिवाइन एंड एवरीथिंग एल्स वुड फॉल राइटली एट द राइट प्लेस. डेफिनेटली. यस. सोनल जी, आपका मैंने कास्ट के साथ फ़ोटो देखा था, तारक मेहता के कास्ट के साथ. सो आई जस्ट वांट टू नो कि उसके बिहाइंड कुछ स्पेशल मेमोरीज या फिर कुछ इंसिडेंट्स हैं क्या जो आप शेयर करना चाहेंगी? तारक मेहता जो कास्ट था, आई थिंक सोडी वॉज मिस्टर सोडी, द वन हु इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर सोडी एंड मिसेस सोडी. एंड इवन Abdul was also there. It was at the time of Navratri where I performed for the 9 days. So yes, आते हैं जब बड़ा स्टेज होता है, so they do visit us. They enjoy the event. अच्छा. Yeah. That's nice. सोनल जी, आपके कुछ मेमोरेबल फैन मोमेंट्स बताइए आपके लाइव कॉन्सर्ट्स में, लाइव परफॉर्मेंसेस में. जहाँ भी जाती हूँ, स्पेसिफिकली जो बड़े पैमाने पर, जो बड़े स्टेज पर जो मैं शोज़ करती हूँ, तो दे रियली, आई मीन, दे अप्रिशिएट मी एंड दे लुक मी फ्रॉम ए डिफरेंट लेवल. मतलब उनका मुझे देखने का, दे गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज आई एम इनटू सूफी म्यूज़िक. और जब मैं कलाम गाती हूँ और वो एक अलग रेपो होता है विद द ऑडियंस, राइट? सो when the audience rise at the my level from the consciousness from where I am performing, right? तो वो एक बहुत ही spiritual and very enlightening moment होता है. So या बहुत से ऐसे शोज़ हैं जो मैंने सालों पहले भी किए थे, लेकिन आज भी वो सुनने वाले अभी भी टच में हैं. एंड दे कीप कॉलिंग मी एंड क्या हाल है मैडम, कैसे हैं आप, कब आ रहे हैं, दिल्ली कब आ रहे हैं, भोपाल कब आ रहे हैं, मुंबई कब आ रहे हैं, आइए. सो ये उनका प्यार है, बुला रहे हैं. यस, प्यार से याद करते हैं, हमारे घर पे आइए मैडम, इस बार होटल में मत रुकिए, हमारे घर पे आइए, हमारे घर पे खाना खाइए, ऑल दिस थिंग्स. बट अगेन I don't go anywhere because
एज आई सेड इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अपने आप जहाँ भी मेरा जहाँ भी रुकना होता है, अगर दिल्ली जाती हूँ, बम्बई जाती हूँ या भोपाल जाती हूँ, तो जहाँ भी रहना होता है वहाँ पर आई स्टे पीसफुली विद माई सेल्फ. बट इट्स ऑफ कोर्स द लव ऑफ द people and audience who are listening to. So, do you think that music teaches us philosophy and life lessons apart from the melodies? Music teaches spirituality. फिलोसॉफी तो ज़िंदगी सिखा देती है. जैसे वो बहुत ही खूबसूरत कोट है, When life doesn't find a singer to sing her heart, when life doesn't find a singer to sing her heart, she produces a philosopher to speak her mind. तो ये ज़िंदगी के तो ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस कोट इज़ ऑफ खलील गिब्रान साहब. ओके. तो ज़िंदगी फिलोसॉफी तो बहुत सुंदर कोट है. आता है. थैंक यू. यस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट कि ज़िंदगी सिखाती है, जो भी सिखाती है ज़िंदगी सिखाती है. एंड अब आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करा है तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता बिना म्यूज़िक के आपको ऐसे जाने दें हम. सो एक दो लाइन हो जाए. डेफिनेटली. रखियो मेरे राम रे. जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, जब से राधा श्याम के राधा बन गई श्याम. सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं फीका नाम. सांसों की माला पे सिमरू अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम. सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम. लाली मेरे लाल की जिते देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल. सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम. सिमरूं मैं पीका नाम, सिमरूं मैं पीका नाम. आय हाय. बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा. थैंक यू. Thank you Sunil ji for sharing your beautiful music and your thoughts with us today. It was truly inspiring.
I wish you success and peace in your musical journey and life. Thank you so much.